start the session. Okay. Yes. Shall we start the class? Yes, it's almost 6 to, so let's start. Let me share the screen. Okay. Okay. So this is what we have been doing since 2 days. Properties of soil. Yesterday we have seen the properties of soil till all this soil color and all this we have seen. Pore space. We have seen how to measure the soil moisture. We have seen soil air, and we have started with soil pH. Okay. And we have seen what exactly is soil pH and how it in as it and we understood that it influences the nutrient availability, soil physical condition and plant growth. How that we'll be seeing in the next few slides, wherein we'll be looking into the कि soil salinity होता क्या है, types of soils based on the soil salinity, so acidic soils, saline soils, alkaline soils, ये सब हम लोग देखेंगे. So before that, अगर pH as such जो हम लोग देख रहे हैं, we'll see the what are the various factors that affect the pH. Okay. Now, the first thing that affects the soil pH is the percent base saturation. So basicity मतलब उसका non acidic cations के basis पे it will affect the pH, क्योंकि non acidic cations अगर ज्यादा है इसका मतलब है that soil is basic in nature, and अगर वो कम है इसका मतलब है the soil is acidic in nature. So simple, a low percent base saturation means acidity, whereas the percent base saturation of 50 to 90 it will result in neutrality or the alkalinity. Very very important. So it means that if the base saturation, it refers to the percentage of soil's cation exchange capacity जो already हमने देखा है, if that is occupied by the basic, that is non-acidic cations like calcium, magnesium, potassium, sodium, then we can say that it is basic in nature, because most of these the bases, the ions that are attached or latched on to the those negatively charged particles, they are basic in nature. वही अगर acidic cations देखेंगे तो these hydrogen plus ions and aluminium ये acidic कैटयन से, तो इट मींस इन अगर ये ज्यादा रहेंगे तो इसका मतलब है उसका pH हाई है, that means it is basic in nature. So here when we talk about higher base saturation मतलब higher soil pH मतलब higher base saturation मतलब क्या है, it is जो भी the cation exchange capacity जो sites है वो basic cation से भरपूर है, मतलब वो ज्यादा है, सिंपल. And lower base saturation, it means lower soil pH where it is more acidic in nature. So when more acidic in nature, हमें liming करना पड़ेगा with gypsum or lime so as to correct the acidity. वो किस तरह से amelioration practices है वो आगे देखेंगे हम लोग. So एक example मैंने दिया है यहाँ पे, soil with 80% base saturation means that 80% of its exchange sites जो colloidal complex में है, that are occupied by basic cations like these, okay, making it less acidic and more fertile. A soil with 20% base saturation has more acidic cations like hydrogen ions and aluminium ions,
leading to low pH, that is acidic soil, which may not be suitable for many crops. But yes, it has been understood that some plants prefer higher base saturation, that is like wheat, maize, etc., while others tolerate lower base saturation like blueberries, pine trees, etc. वो और भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी आगे. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉइल कोलॉइड्स. किस तरह के सॉइल कोलॉइड्स है, मतलब यहाँ कोलॉइड्स मतलब बेसिकली किस तरह के क्ले मिनरल्स है या फिर किस तरह के ह्यूमस पार्टिकल्स है. सो ये द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इन्फ्लुएंस सॉइल रिएक्शन टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज दे आर द वंस विच आर टेकिंग अप द कैटायंस अटैचिंग टू देमसेल्व्स. सो ऑब्वियसली उनका भी कुछ तो रोल होगा. So different types of colloids vary in their pH at the same percent base saturation. Again, why? Because उनके ऊपर जो colloids के ऊपर किस तरह के cations attached है उसी के basis पे pH dependent रहता है इसी की वजह से. So this is due to the difference in the ability of different colloids to release H plus ions into the soil solution. For example, at the same percent base saturation, the smectite has much more lower pH than kaolinite. So इसका मतलब है वो कितनी कितने हाई पावर के साथ वो H प्लस आयोन्स को अटैच कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं. दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ soil colloids. ठीक है. When hydrogen plus ions forms the predominant absorbed cations on clay colloids, the soil reaction becomes acidic. ये ऑलरेडी हमने इसमें देख लिया है इन परसेंटेज बेस सैचुरेशन में. ठीक है. थर्ड आता है soil solution. Now the more dilute the solution, the higher the pH value. Hence pH tends to drop as the soil gets progressively dry. Very, very important. Soil reaction is also influenced by the presence of carbon dioxide in soil air. As the carbon dioxide concentration increases, the pH falls. क्यों? Carbon dioxide, it reacts with water to make carbonic acid, right? Carbonic acid जहाँ पे भी बनता है मतलब acidic nature. So that's the reason the pH falls and increases the availability of the nutrients. Under field conditions, plant roots and microorganisms liberate enough carbon dioxide, which results in lowering the pH appreciably and making the availability of the nutrients increase. Okay, very very important. किस तरह से carbon dioxide help करता है plants में. So this is one. Next, adsorbed basic cations. Again, the comparative quantity of the exchangeable cations like calcium, magnesium, sodium and potassium adsorbed on the colloids will determine the pH. मतलब ये जितना ज़्यादा रहेंगे अगेन उतने बेसिसिटी होगी. नेक्स्ट, क्लाइमेट. किस तरह का क्लाइमेट है. अगेन रेनफॉल प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द रिएक्शन ऑफ सॉइल. इन जनरल, सॉइल्स फॉर्मिंग इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल are acidic, that is low pH value, while those formed in regions of low rainfall, they are alkaline in nature, that is high pH value. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा नेटिव वेजिटेशन. वहां पे किस तरह का वेजिटेशन है. अगेन ये सब डिपेंडेंट रहता है किस तरह का वेजिटेशन है कि वहां पे कितना रेनफॉल हो रहा है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ सॉइल दैट दे आर हैविंग एंड soil climatic conditions, all this. Okay. Soil becomes more acidic when develops under conifer ecosystem. Soils often become more acidic when crops are harvested because of removal of bases. Okay, so conifer ecosystem हमने देखा है ना, जहाँ पे भी coniferous forest होते हैं, there lot of organic matter gets added and उसको decompose होने में बहुत time लगता है, because of which the acidity is higher in those areas, right? Spodosols जो हमने देखा है. Type of crop determines the relative amounts of removal. For example, legumes generally contain higher levels of bases than do grasses. Grasses की जगह legumes, because again they add fertility to the soil. Next आता है nitrogen fertilization. So nitrogen from the fertilizer, organic matter, manure and legume nitrogen fixation, they produce acidity. क्योंकि nitrification या nitrogen fertilization के time पे जब भी होता है देयर लॉट ऑफ एसिड्स आर रिलीज, बिकॉज ऑफ विच द एसिडिटी डेवलप्स एंड इट प्रोड्यूसेस एसिडिटी. एट लोअर
nitrogen rates, acidification rate is low but is accelerated as nitrogen fertilizer rate increases. Okay, next आता है flooding. The overall effect of submergence is an increase in pH in acid soils and a decrease in basic soils, क्योंकि जब moisture बहुत ज़्यादा होता है there will be reduction in pH. So regardless of their original pH values, most soils reach pH of 6.5 to 7.2 within 1 month after flooding and remaining at the level until dried. जैसे जैसे dry होता रहता है वैसे वैसे pH कम होता रहता है, right? That's what they said, submergence is an increase in pH in acid soils. एक तो flushing हो जाता है one thing, and the other thing, as the drying increases, acidity increases in the soil. ये हो गया basic pH and what are the various factors affecting the pH. Now comes the problematic soils. There are two kinds of problematic soils based on salinity and based on acidity. So based on salinity का सबसे पहले देखेंगे problematic soils. Now here the cause of concern for growth of crops because of unfavorable characteristics, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल रहे हैं problematic soils, कुछ तो problem है उन soils में because of which they are not able to support the growth of the plants. So इसमें है saline soils, अल्कलाइन सॉइल्स, इन्हीं को कई जगह पे आप लिटरेचर में सोडिक सॉइल्स भी देख सकते हो, ठीक है? सोडिक सॉइल्स और अल्कलाइन सॉइल्स में कोई फर्क नहीं है, इट ऑल जनरली, अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर देखोगे, यूएस, यूके, एफएओ, इन सब लिटरेचर में रादर देन द वर्ड अल्कली दे यूज मोर एज सोडिक. ओके, वही आप यहाँ का लिटरेचर देखोगे तो यहाँ एल्कली सॉइल्स यूज करेंगे. सो जहाँ जिस तरह से हमें कंटेंट बनाया गया है, या फिर कंटेंट लिया गया है, बेस्ड ऑन दैट दीज आर द वेज एल्कली सॉइल्स एंड सोडिक सॉइल्स आर सिमिलर एंड सेलाइन अल्कलाइन सॉइल्स. सो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स है. नाउ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी. नाउ बिफोर गोइंग एनी फर्दर 2 to 3 टर्म्स है वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कई बार वो आगे आएंगे. So यहाँ पे if you understand, it would be very easy for us to understand the rest of the concepts. सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास, कितना वो कर पा रहा है electricity passage, conduction of electricity. So that is called the electrical conductivity of that particular item. So यहाँ पे we are talking about the soils. So here when we talk about electrical conductivity, it is measured in Siemens per meter और decisiemens per meter, दोनों तरह से measure कर सकते हैं. Next term है हमारा exchangeable sodium percentage. Now हमने एक और देखा था कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी, राइट? ये एक्चुअली सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा. नाउ कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी हमने देखा है, हाउ वेल द कैटआयंस आर बीइंग एक्सचेंज्ड देयर बाय मेकिंग देम अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. ये सब हमने देखा है. कैटआयन एक्सचेंज होता क्या है एग्जैक्टली, वो किस तरह से होता है, एंड व्हाट इज द कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉइल, वो भी हमने देखा है. नाउ फ्रॉम दैट ओनली दिस हैज बीन अराइव्ड. So here ESP is nothing but that is exchangeable sodium percentage, is a percentage of sodium cation as the percentage of total CEC. So जितने भी cations exchange हो रहे हैं उसमें सोडियम कैटआयन का परसेंटेज क्या है, that is called as the exchangeable sodium percentage. ठीक है, यहाँ जो भी explanation दिया, this is about the cation exchange. See, these are negatively charged, that is there are negatively charged sites on the presence of clay minerals and organic matter present in the soil. These sites are very important for holding the plant nutrients for the usage of the plants. These nutrients exist in the form of cations and they'll be exchanged, right, with the H plus ions, and thereby they'll be released into the water and immediately the plant root hairs वो absorb कर लेती है. ये सब हमने पढ़ लिया है, उसी का है ESP. Very very important ये तीनों terms. Now when we talk about the soil characteristics, before getting into this table which is very very important, let me first take you through the basically होते क्या है ये saline soils, alkaline soil and saline alkaline soils. Now saline soils, now these are those soils where sodium ions are present in soluble form in the soil water. Okay,
सॉइल वाटर में ये सोडियम आयंस बिल्कुल फ्री है, एंड जहां पे भी फ्री आयंस रहते हैं विदाउट विदाउट कॉम्बिनेशन विथ एनी अदर आयन, वो उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो फ्री आयन्स है, तो दे विल बी एबल टू pass that electricity very easily. So this mainly occurs in coastal areas where the sea water splashes on the land during high tide, and when it recedes back, the salt is left dissolved in soil water. Since the salt present in soluble form, it is able to conduct electricity better when compared to other forms like the alkali soils. Okay, ये हो गया saline soils where sodium ions are present in soluble form. नेक्स्ट आता है एल्कली सॉइल्स और सोडिक सॉइल्स। यहाँ पे सोडियम आयन्स आर अटैच्ड टू द नेगेटिवली चार्ज्ड साइड्स ऑफ द क्ले एंड द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। सो हियर sodium ions are present in complex form, and they are competing with the plant nutrients that are present in the soil, and the salt is present in the complex form, and thus it does not conduct electricity as effectively as compared to the saline soils. These are also known as sodic soils. ठीक है, थर्ड आता है हमारा saline alkaline soils. Now this is a combination of saline plus alkaline soil. So first the sodium ions get attached to the negatively charged sides, and still there is excess amount of sodium ions that exist in the soluble form which can conduct electricity. So here these conduct electricity better than alkali soils because of the presence of soluble sodium ions in these soil water. Okay, very important. ओके, सो ये तीन है। नाउ विल लुक एट दिस, अभी इजी होगा आपके लिए। सो यहाँ पे पीएच अगर देखा जाए तो सेलाइन सॉइल्स देयर पीएच इज लेस देन 8.5 बट ग्रेटर देन 7। ओके, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी नो सेलाइन सॉइल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहता है, सो हियर इट इज ग्रेटर देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर, ये उसका यूनिट है। एंड उसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, क्योंकि ये फ्री आयन्स है तो कहीं पे कोई साइट पे उनका वो नहीं है, सो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का सवाल ही नहीं उठता। सो हियर इट इज लेस देन 15। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्कली सॉइल्स। यहाँ पे इसका पीएच है ग्रेटर देन 8.5 बट लेस देन 14, क्योंकि पीएच स्केल 14 तक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट वुड बी लेस अगेन, ओके, because here they are in compound form, they are latched on to the colloidal complexes, and iska ESP would be great because they are latched on to the that colloidal complex, so उनका exchange बहुत ज़्यादा होता है, so there is lot of sodium ions present for exchange. Saline alkaline इसका है pH 8.5, बिल्कुल बीच में रहता है, but electrical conductivity high रहेगा greater than 4. Why? Because they have free sodium ions, and इसका ESP भी high रहेगा. Why? Because again compound form में भी रहते हैं इसमें. This is very important, इस पे कई सारे questions पूछे जाते हैं. ठीक है, ये भी हमने कर लिया. Now problematic soils अभी हमने based on salinity देख लिया है, based on pH देख लेंगे, वो भी same acidic soils उसी के ऊपर रहता है, but again एक बार देख लेते हैं. Soils having pH less than 7 is called acidic, and the soils having a pH greater than above 7 up to 14 is called as basic, that is alkaline. All these three soils, that is saline, alkaline, alkali, and they have a pH greater than 7. जो already हमने देख लिया है, saline soils का greater than 7 but less than 8.5, alkaline soils का greater than 8.5. okay, ये तो हमने देख लिया है, एंड सेलाइन अल्कलाइन का 8.5. सो हियर दे डिफर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयंस दैट आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल्स, वो भी हमने देख लिया है. फ्री सोडियम आयंस है, कंपाउंड फॉर्म में है, बोथ है. बेस्ड ऑन दैट ओनली दिस कंपैरिजन इज गिवन. सो हियर दिस 5 तक अगर हम लोग देखेंगे तो एसिडिटी ज्यादा है. 5.5 टू क्लोज टू 8, हम 8 तक भी बोल सकते हैं. दिस यू कैन कॉल इट एज न्यूट्रल. And neutral soils are the most preferable soils for majority of the crops, but still there are few crops that can okay tolerate this acidity or the alkalinity or the salinity. ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं. Now हाँ,
अभी नहीं, एक एक करके अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एसिडिक सॉइल्स देखेंगे, फिर सेलाइन अल्कलाइन सॉइल्स देखेंगे, एंड विल सी हाउ व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ देम एंड हाउ वी कैन करेक्ट देम। नाउ एसिडिक सॉइल्स, सबसे पहले रीजंस व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। Humus decomposition results in release of large amounts of acids, thereby lowering the pH. So जहाँ पे भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, ये हमने देखा है, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जहां पे भी रहेगा, देयर द एसिडिटी लेवल्स वुड बी हाई। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। And rainfall in areas with more than 100 centimeters rainfall, it is associated with high relative humidity, and calcium and magnesium is dissolved in water, leached out due to the base saturation, leached out due to this base saturation of the soil decreases, thereby this increases the acidity. जब बेस सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे एसिडिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट्स और अमोनियम क्लोराइड्स which result in depletion of calcium by CEC phenomenon. So जहाँ पे भी कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयोन्स नहीं रहेंगे, so वहाँ पे एसिडिटी बढ़ेगा, दैट इज एल्कलिनिटी कम होगा एंड एसिडिटी बढ़ेगा, बिकॉज दीज आर बेसिक मिनरल्स। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर। एलिमेंटल सल्फर जहाँ पे भी डालते हैं वहां पे अगर मॉइस्चर आ गया तो डेफिनेटली इट विल कंबाइन विद दैट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट द काइंड ऑफ पेरेंट मटेरियल, यस ये भी एक रीजन है। रॉक्स आर कंसिडर्ड एज एसिडिक विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका, एंड दिस व्हेन कंबाइंड विथ वाटर एसिडिटी इंक्रीजेस। सो जहाँ पे भी सॉइल फॉर्मेशन, नया नया सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे भी you can find this. Now what are the direct effects of acidic soils? Plant root system does not grow normally due to toxic hydrogen ions, बहुत ज्यादा compete करते हैं। Permeability of plant membranes are adversely affected due to soil acidity. Very very important, permeability पे बहुत effect पड़ता है। Permeability effect पड़ेगा मतलब they'll not be able to absorb as usual. एंजाइम एक्शंस में भी ऑल्टर्ड सिंस दे आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जहां पे भी एसिडिटी रहेगा वहां पे एंजाइम्स अपना फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना व्हाट आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या है एसिडिटी से? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अकर बाय लीचिंग, एल्यूमिनियम मैंगनीज आयरन अवेलेबल इन टॉक्सिक अमाउंट्स बिकॉज दीज आर ऑल एसिडिक फॉर्मिंग फैक्ट मिनरल्स। सो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। Now what are the effect on activity of microorganisms? Most of the activities of the beneficial organisms like acetobacter, nodule forming bacteria of legumes are adversely affected as acidity increases, क्योंकि वो high acidic conditions में survive ही नहीं कर पाएंगे। Acid soils constitute 30% of the total cultivable area in India. And why these soils are formed? Due to drastic weathering under hot humid climate and heavy precipitation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एसिडिटी का ये भी एक रीजन है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में व्हाट विल हैपन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन सही से नहीं होगा, इट विल बी वेरी स्लो, एंड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन स्लो होता है दैट लीड्स टू एसिडिटी। Okay, now if we look at the kind of acidic soils in India, about 21 million hectares of acid soils are found in the northeastern regions including Sikkim, with maximum area under Arunachal Pradesh, 6.8 million hectares of land जो अरुणाचल प्रदेश में है, दैट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज अगेन ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हेवी प्रेसिपिटेशन, फॉलोड बाय असम, मेघालय, मणिपुर। आई मीन पूरे इंडिया में आपको सबसे ज्यादा अगर एसिडिक सॉइल्स कहाँ मिलेंगे, दैट वुड बी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दूसरे स्टेट्स में भी है, इट्स नो डाउट इन दैट, बट कॉम्पोजिशन वाइज देखेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा है। अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे एक बार एक क्वेश्चन आया था इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड द अदर इसके ऊपर आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट हैज द हाईएस्ट एसिडिक सॉइल्स इन इंडिया। कई सारे स्टेट्स दिए थे एंड अरुणाचल प्रदेश वाज द राइट आंसर इन दैट। सो मूविंग ऑन टू दिस, सी पीएच रेंज में देखा जाए तो एसिडिटी 3 to 4 वेरी मतलब हाईली एसिडिक है, 4 to 5 स्ट्रॉन्ग,
5 to 6 you can say moderately acidic, 6 to 7 slightly acidic. Now this is the nature of acidity that you have seen based on the pH range. ठीक है. Now ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो इस तरह के सॉइल्स में भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि pH 4.5 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल्स बट स्टिल सिट्रस ब्लूबेरीज उसमें अच्छे से आ सकता है. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें पूछा गया था विच इज दैट क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप that is the crop that can tolerate high acidity in soils. ओके अगर सॉइल्स में एसिडिटी नहीं भी है तो उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा. उसी तरह के फ्रेमिंग था क्वेश्चन का. एंड दैट करेक्ट आंसर वाज ब्लूबेरीज. ओके मतलब इतना उसको जरूरत है एसिडिक सॉइल्स. नेक्स्ट 5 पे टोबैको, एप्पल, ग्रेप्स, प्लम, वाटरमेलन. 5 भी स्ट्रॉन्ग में ही आता है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट के बीच में, यू कैन अंडरस्टैंड. टोमेटो अगेन मॉडरेट, कैबेज, कैरेट सब स्लाइट वाले में आ जाते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू, ये तो हो गए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. एग्रीकल्चर क्रॉप्स में देखेंगे सीरियल्स में देखा जाए तो हाईएस्ट अगर एसिडिक इसमें वो आ सकते हैं तो इट इज राइस 4 to 6 मतलब स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट एसिडिटी लेवल्स में भी इसका ग्रोथ आराम से हो सकता है. ओट्स मिनिमम 5 मतलब स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट अगेन. एंड टी ये भी 4 to 6 मतलब स्ट्रॉन्ग टू मॉडरेट. सो ये सारे डिफरेंट क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम पीएच रेंज, एग्जैक्ट नहीं, ऑप्टिमम पीएच रेंज. ओके सो ये हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एसिडिक सॉइल्स. नाउ इसको मैनेज कैसे करेंगे. नाउ management matlab all these involve soil amelioration approaches. Now what is that? Soil amelioration approaches typically involve either the strategic application of soil amendments, okay, or the use of deep tillage or combination of two. मतलब इसमें soil physical conditions को हम physical conditions एक तो इसको चेंज करेंगे सॉइल फिजिकल कंडीशंस, देयर बाय दे विल इंपैक्ट द एसिडिटी. ओके एंड दूसरा है केमिकल मेथड्स, जहां पे कुछ केमिकल्स डाल के हम लोग उस एसिडिटी को कम कर रहे हैं. ठीक है. So thereby see addition of amendments to correct the soil abnormalities or by manipulating the agronomic practices depending upon the climatic and edaphic conditions, they all fall under soil amelioration processes. ठीक है. सो उसमें हमने देखा है इधर फिजिकल कंडीशन को करेक्ट कर देंगे कुछ चेंज करके, देयर बाय इम्पैक्टिंग और केमिकल मेथड्स. सो वन केमिकल मेथड सबसे ज्यादा इसमें इम्पैक्ट लाता है. एक तो फर्स्ट लीचिंग भी कर सकते हैं, नॉट लीचिंग एसिडिक सॉइल्स में, बेसिक सॉइल्स में लीचिंग कर सकते हैं. Lime has been recognized as an effective soil ameliorant as it reduces aluminum, iron, manganese toxicity and increases base saturation, that is phosphorus and molybdenum availability of acidic soils. So now what are these lime that can be used, carbonates, oxides, hydroxides of calcium and magnesium. These are all called as agricultural lime क्योंकि ये बहुत ज़्यादा easily available है market में, and this can be used by the farmers to correct the acidity of the soils. So liming materials include commercial limestone like your calcium carbonate and dolomite limestone like your calcium magnesium carbonate, which are widely used amendments. Very, very important. What is agricultural lime? What are the various liming materials, etc. Now, किसी फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर बोल रहा है कि मेरे फार्म में एसिडिक सॉइल है, हम मुझे उसको करेक्ट करना है. ना करेक्ट करना है तो उसमें वी नो दैट लाइमिंग मटेरियल्स ऐड करना है, लेकिन कितना लाइमिंग करना है मतलब कितना एग्रीकल्चर लाइम इधर लाइमस्टोन या डोलोमाइट कितना डालना है, दैट विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ lime requirement. Lime requirement of an acid soil may be defined as the amount of liming material that must be added to raise the pH to the prescribed value. जो भी value हमें चाहिए, that is जो भी crop उसमें डाल रहे हैं उसके requirement के हिसाब से. ठीक है. Now अब कितना उसमें एसिडिटी है वो कैसे पता चलेगा? That is
गिवन बाय शू मेकर एट ऑल, मतलब उनका और उनके ग्रुप ने 1961 में दिया है, बफर मेथड। ये मेथड यूज करके वी कैन यूज दिस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एन एसिड सॉइल। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू गेट अबाउट मोर अबाउट दिस, बट कई लिटरेचर में सिर्फ बफर मेथड ही दिया गया है, दे हैवंट गिवन द एग्जैक्ट प्रोसीजर हाउ इट इज डन। फिर भी मैं फिर से एक बार ढूंढती हूँ। ओके, सो नेचुरली अकरिंग लाइम सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Lime sources like calcitic, dolomitic, stromatolitic limestones are important carbonates. The other liming sources भी है, like marl, oyster shells, industrial waste like steel mill slag, blast furnace slag, lime sludge from paper mills, press mud from sugar mills, cement waste, precipitated calcium carbonate, etc. Equally effective as ground limestone and are also cheaper sources of liming, other than what we have seen, like these three कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनके अलावा भी और भी कई सारे हैं जो यूज कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल्स। तो ये हो गया हमारा एसिडिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है सेलाइन सॉइल्स। सबसे पहले देखते हैं रीजंस क्या है। इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज सॉल्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग वेदरिंग आर नॉट फुल्ली लीच्ड। Okay, during the periods of higher rainfall, the soluble salts are leached from the more permeable high-lying areas to low-lying areas, and wherever the drainage is restricted, जहाँ पे भी drainage restrict होगा, वहाँ पे the salts get accumulated on the surface as the water evaporates, thereby creating the salinity in the soils. So excessive irrigation of uplands containing salts resulting in the accumulation of salts in the valleys. In areas having salt layer at lower depths in the profile, seasonal irrigation may favor the upward movement of salts. Can you give me an example? ये जो situation मैं अभी बता रही हूँ, excessive irrigation and seasonal irrigation, जहाँ पे salt layer already lower depths में already accumulate हो गया है, that is coming to top, ये कौन से areas में है इंडिया में जो अभी हमें देखने को मिल रहा है? Yes, anyone who wants to try? If you have any idea about India's agriculture, okay, थोड़ी बहुत idea भी होगा, तो we have been hearing this a lot in this news also in the recent times. कुछ idea आपको? गुजरात। Yes, one गुजरात, another one state जो बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा problematic इसमें हो गया है। साउथ इंडियन स्टेट लाइक केरला। पंजाब। पंजाब में इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओवर इरिगेशन, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल्स दे आर नाउ करेंटली रीलिंग अंडर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यस, गुजरात एंड दिस वन, वेरी गुड। नाउ व्हेन सॉइल्स, sorry, now when soils are irrigated with saline water also, the problem occurs. In coastal areas, the ingress of sea water induces salinity in the soil. ये गुजरात में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज दैट इंजरी दैट विल हैपन टू द क्रॉप्स बिकॉज ऑफ सेलाइन सॉइल्स। नो, सैलिनिटी जब होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, सो वाटर अवेलेबल भी होगा तो दे नॉट बी एबल, द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू टेक अप, उल्टा उनका पानी बाहर आ जाता है, देर बाय एक सूडो व्हाट यू विल से ड्रॉप टाइप का क्रिएट हो जाता है। सो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस द वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ रेट। लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड, क्योंकि ऑलरेडी जो अगर न्यूट्रिएंट्स भी है तो they'll not be able to take up because of these salts in the soil। वो ही जो एक्सचेंज, जो सी कैटियन एक्सचेंज साइट्स हैं उनके ऊपर यही रहेंगे। So development of the thick layer of surface wax imparts bluish green tinge to the leaves, जहाँ पे भी salinity होती है, this is what we can see. Due to high electrical conductivity, germination percentage of seeds is also reduced. ठीक है? Now, what are the crops that are suitable for saline soils? बार्ली, शुगर बीट, कॉटन, ये सारे जितने भी है इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी डाला है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी डाला है। दीज आर दोज क्रॉप्स दैट आर सुटेबल टू बी ग्रोन इन सेलाइन सॉइल्स। सेलाइन सॉइल्स आर फाउंड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। इसको रेह बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, थार बोलते हैं पंजाब में, खजर बोलते हैं गुजरात में, खर बोलते हैं महाराष्ट्र में। एंड इज देयर एनी नेम गिवन टू एसिडिक सॉइल्स इन अरुणाचल प्रदेश?
एनी आइडिया? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं मिला नहीं है लिटरेचर में, बुक्स में। नहीं भी है तो लीव इट, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है एल्कलाइन सॉइल्स। ऑलरेडी हमने देखा है एल्कलाइन सॉइल्स का क्या है, रीजंस क्या है। एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ अपलैंड्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द वैली। सेम वही रीजन है। In arid and semi-arid areas, salt forming during weathering are not fully leached. In coastal areas, the soil contains carbonates. The ingression of seawater leads to formation of alkali soil due to the formation of sodium carbonates. Irrigated soils with poor drainage, all these lead to alkaline soils. ठीक है, now how it is going to injure the crops? High exchangeable sodium, ESP बहुत high रहता है इनका, which decreases the availability of other important nutrients like calcium, magnesium to the plants. Dispersion of soil particles due to high exchangeable sodium leads to poor physical condition of soil. Low permeability of water and air, tends to be sticky when wet and becomes hard on drying because of those salts that are already present. Toxicity due to excess hydroxyl and carbonate ions. Growth of plants gets affected क्योंकि ये OH ions, कार्बोनेट आयन्स, अगर H प्लस आयन्स वो रहेंगे जो एसिडिक वाले हैं, दिस विल बी एबल टू रिमूव, बट हो नहीं रहा है, so because of which उनका टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है. Growth of plants gets affected mainly due to nutritional imbalance, restricted root system, delay in flowering in sensitive varieties, typical leaf burn in annuals and woody plants due to excess chloride and sodium. Important. Bronzing of leaves in citrus, वो भी अल्कलाइन सॉइल्स की वजह से हो जाता है कभी कभी. इट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक, ये हमने ऑलरेडी जब जिंक का किया था वहां पे हमने दिया था कि हाई जहां पे भी अल्कलिनिटी होती है देयर इट द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक विल बी अ problem. Now, which are the crops that are suitable for alkaline soils? Rice is the preferred crop in alkali or sodic soils. Now, sodic soils पहली बार मैंने यहाँ use किया है. Now, what are they? Sodic soils are characterized by the predominance of sodium in the complex with the exchangeable sodium percentage exceeding 15%. जो हमने देखा ऑलरेडी ESP and pH more than 8.5 till 10. Sodic soils is also known as black alkali soils or solanite soils, और रेगुलर जो alkali soils अभी हम लोग बोल रहे हैं वही है. ठीक है, बट कुछ लिटरेचर में ये अलग से उन्होंने डेफिनेशन दिया, तो सो आई थॉट ये भी मुझे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है. ठीक है. Now, these soils, those soils are found in the drier parts of Bihar, UP, Haryana, Punjab, Rajasthan, Maharashtra. In जगह पे alkaline soils you can find, and the accumulation of the salts makes the soil infertile and renders it unfit for agriculture. Now, एक और इन्होंने सोडिक सॉइल्स के लिए एक दिया है. सी इन कॉन्ट्रास्ट टू सेलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल्स हैव एक्सेसिव लेवल्स ऑफ सोडियम. ओके, वो तो है. Soil sodicity causes degradation of soil structure. Soil structure ही बिल्कुल खराब कर देता है, मतलब because of that salt accumulation physically. Okay, because of that the soil structure is imbalanced and which doesn't support the plant growth. So that process is called as soil dispersion. Important, ये भी important definition है. ठीक है. Now, how will you reclaim this alkaline, or when it comes to the reclamation, alkaline soils and saline soils के लिए same ही reclamation methods है. One, physical amelioration. Second, chemical amelioration. जैसे physical वाले में जैसे क्या क्या methods कर सकते हैं without adding any chemicals. This does not actually remove the sodium from the exchange complex but improve the physical condition of the soil through improvement in infiltration and aeration. So वो physically इसको remove नहीं करता है actually, but उसको dilute कर देता है, thereby that can be removed. Sand filling, which reduces heaviness in the soil and increases capillary movement of water, thereby sodium का effect कम हो जाता है. Providing drainage is also practiced to improve aeration and to remove further accumulation of salts at the root zone. Deep ploughing is adopted to break the hard pan developed at the subsurface due to sodium and improving free movement of water. This also helps in improvement in aeration. Okay.
Profile inversion, inverting the soil benefits in improvement of the physical condition of soil as that of deep ploughing, same उसी की तरह, thereby जो subsurface है b horizon वो break हो जाता है, thereby water movement free हो जाता है and aeration भी सही होता है. Profile inversion में भी almost वही है. नेक्स्ट आता है केमिकल एमेलियोरेशन. सो रिक्लेमेशन ऑफ alkali or sodic soils requires neutralization of the alkalinity and replacement of most of the sodium ions from the soil. Exchange complex by the more favorable calcium ions. Again calcium salts यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. Now when we talk about the chemical amendments in alkaline soils, इसमें दो तरह के कैल्शियम सप्लायर्स ऑलरेडी हमने देखा है कि कैल्शियम सबसे ज्यादा डालना है. हाउ? डायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स लाइक योर जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फोजिप्सम, और इनडायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स लाइक एलिमेंटल सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, पायराइट्स, फेरस सल्फेट. Among all these, okay, gypsum is by far the most commonly used chemical amendment. Okay, and one more important point that you have to understand, that is calcium carbonate is insoluble in nature, which is of no use in calcareous sodic soils. क्योंकि already वहाँ calcium carbonate, precipitated calcium carbonate, that is insoluble calcium carbonate बहुत ज़्यादा है. Okay, so in that case यहाँ फिर calcium carbonate डालोगे तो that will not add value. But this can be used in non calcareous soils जहाँ पे प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है. One second, sorry. Yes, since pH of the soils are low at surface and favoring solubilization of calcium carbonate. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बेसिसिटी बोलते ही आपको डाउट आएगा ना, ऑलरेडी बेसिक है. वाई वी आर एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट? दिस इज फॉर विच इट इज एडेड एज पार्ट ऑफ द केमिकल एमिलियोरेशन प्रोसेस. ये हो गया हमारा रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली एंड सैलाइन सॉइल्स. नेक्स्ट आता है द मेजर टाइप्स, सॉइल टाइप्स इन अरुणाचल प्रदेश. सबसे पहले इंसेप्टिसॉल्स, ये सबसे ज्यादा है. These are young soils with weakly developed profile. They are commonly found in the warm per humid eastern Himalayan ecosystem. जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी एक पार्ट है, and are characterized by high acidity. सो अरुणाचल प्रदेश के हाई एसिडिक सॉइल्स का एक रीजन है इंसेप्टिसॉल्स, बिकॉज ऑफ दिस वार्म पर ह्यूमिड ईस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम. Insectisols cover approximately 37% of the state's total geographical area. One. Next आता है antisols. These are very young soils with little or no profile development. They're commonly found in the warm per humid Shivalik hill ecosystem and hot and humid plain areas, of which Arunachal Pradesh is also a part. Few districts. Antisols are generally acidic and cover about 35% of the state's total geographical area. आई हैव ट्राइड अ लॉट कि आपको एक सॉइल टाइप्स का मैप दे दूं, लेकिन जो मुझे मिला था ना, इट्स जब वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, नॉट नाउ, सम 20 years बैक, उसमें उन्होंने एक सॉइल टाइप का मैप क्रिएट किया था, बट उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही से है ही नहीं. मैं मतलब उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. मैं कितना भी उसको मीन एक्सपैंड करने की कोशिश करूँ, हर तरीके से कर लिया, नहीं हो पाया. दैट्स द रीजन ये मुझे सिर्फ कंटेंट में ही देना पड़ रहा है विदाउट एनी पिक्चर. नेक्स्ट आता है अल्टीसॉल्स. नाउ दीज आर हाईली वेदर्ड सॉइल्स विथ हाई कंटेंट ऑफ क्ले एंड दे टिपिकली फाउंड इन द ओल्डर लैंडस्केप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस एंड कवर अबाउट 14% ऑफ द स्टेट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. Next, alphisols. These are relatively fertile soils and have high content of organic matter. They are found in small patches in the lower valleys and cover only about 0.5% of the state's TGA. जो सॉइल टाइप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जो गवर्नमेंट का साइट है, वहां पे यही डॉक्यूमेंट का है, हर जगह पे यही रिपीटेड है. ओके, so these are the ones, and these are some of the soil characteristics of Arunachal Pradesh and their implications. सबसे पहले टेक्सचर.
The texture of soil, which refers to the proportion of sand, silt, and clay particles, varies across the state. In the mountainous region, soil tend to be coarse texture with a high proportion of sand and gravel, while in the valleys they are finer texture with a high clay content. Obviously, क्योंकि movement, water movement रहता है, तो along with that, lot of clay or the particles, suspended particles, they keep on moving downwards. Acidity. Most soils in Arunachal Pradesh are acidic due to high rainfall and leaching basis. Otherwise, मैं हमने यहाँ पे भी reason देख लिया है कि क्यों acidic है. Depth. Soil depth varies significantly depending on the topography. Shallow soils are common in the mountainous areas due to erosion, while deeper soils are found in the valleys because of the depositions. Organic matter. The high forest cover contributes to a significant amount of organic matter in the soils, especially in the inceptisols and entisols. Organic matter is crucial for soil fertility and water retention. क्योंकि entisols वहाँ पे deposition है because of this movement of soil. So उन depositions में और भी forest organic matter is being added. Erosion. The steep slopes and high rainfall make the soils of Arunachal Pradesh highly susceptible to erosion. This can lead to loss of topsoil and degradation of land. जो बहुत पहले से हो रहा है, तो अभी जिस तरह से corrections चल रहे हैं, they are working, but still this is what that are the major characteristic features of Arunachal Pradesh soils. ओके, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करके लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ही है, इसके बाद सॉइल सर्वे, ज्यादा कुछ नहीं है. दिस विल नॉट टेक मच टाइम, बट विल दिस डू दिस टुमारो, बट विल डू दिस एमसीक्यूज नाउ. सो कल वाले कंटेंट के बेसिस पे ये एमसीक्यूज हैं, एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक्चुअली कल भी गड़बड़ हुआ था ना, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ. Yes, meanwhile, if you have any questions, you can ask me in today's session. Okay, here comes the first question. मैं chat box यहाँ open कर लेती हूँ. Yes. What is the primary characteristic of clay soil particles when determining soil texture by field method? जब field method से हम लोग soil texture देखेंगे, उसमें what are the main characteristic features that we look? Yes. यस, दे लुक इनटू ऑल. उसका कोहेशन किस तरह से है, स्टिकीनेस किस तरह से, पार्टिकल्स के बीच में प्लास्टिसिटी किस तरह से है. बेस्ड ऑन दैट ओनली द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर इज डन बाय फील्ड मेथड. Okay, now what is the primary limitation of the hydrometer method for determining the soil texture? Yes, हाइड्रोमीटर मीटर मेथड हम लोग दो जगह पे यूज करते हैं in the same methods. Hydrometer method नहीं, as such Stokes law use करते हैं to be precise. Yes, what is the primary limitation? It is not suitable for saline, organic or calcareous soils, क्योंकि फिर उसमें सही से टेक्सचर का पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल. तो पहले इनको क्लियर करना है या क्लीन करना है, ओनली आफ्टर दैट दे कैन डू. ओके, so that's a major limitation here. Next question. According to Stokes' law, what is the relationship between the terminal velocity of a spherical particle settling in a fluid and its radius? Now, यही Stokes' law हम लोग use करते हैं hydrometer method में to understand the soil texture.
यस। यस, व्हाट इज द स्टोक्स लॉ प्रिंसिपल? ये हमने कल डिस्कस किया था। The velocity of the spherical particle is directly proportional to the square of the radius. Okay, this is what Stokes law has to say, and based on that only, ये time intervals के basis पे they'll see how much they are settling and what is the radius, and accordingly they'll say okay ये sand particles है, ये silt है, ये clay particles है. Okay. In the international pipette method, how is the silt and clay content of a soil sample determined? Yes. यस, हाइड्रोमीटर मेथड या फिर इंटरनेशनल पिपेट मेथड, दोनों में स्टोक्स लॉ ही यूज होता है. सो हियर आल्सो, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम ए सस्पेंशन will be helpful in understanding the silt and clay content of a soil sample. Okay, moving on to our next question. What is the primary reason for the darker color of topsoil compared to lower layers in a soil profile? Yes, soil color के ऊपर है question. Yes. Yes, it is because of the accumulation of organic matter on the topsoil that gets added. Oh, sorry, यहाँ पे दिख रहा है आंसर. Okay. मैं ये बता देती हूँ. व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर इन ए सॉइल प्रोफाइल? जब भी रेड कलर आता है सॉइल प्रोफाइल में, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज फेरस या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, सॉरी मैंने चेक किया था अभी, फिर भी आई डोंट नो हाउ इट वेंट ऑफ. सॉरी. In the Munsell soil color system, which of the following correctly defines the three components used to describe the soil color? ये हमने देखा था. We have three components when understanding the soil color, that is the hue, value and chroma. Yes, hue क्या है, value क्या है, chroma क्या है? लगता है आज सब अच्छे से रिवाइज करके आए. गुड. इट इज ह्यू इज, sorry, hue is the dominant spectral color, value is the lightness or the darkness, and chroma is the intensity or purity of the color. Okay, ये है, फिर से मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है for your comfort. Next, a farmer notices that, applied question से कुछ यहाँ से. A farmer notices that despite applying fertilizers rich in calcium and potassium, the crop yield still remains poor. A soil test reveals high levels of sodium and aluminium, जो ये exchange नहीं होने दे रहे हैं. Based on the concept of cation exchange capacity, what is the most appropriate course of action to improve the soil fertility? ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने किया था. Yes, it is
Applying gypsum or organic matter to displace excess sodium and aluminium. ठीक है, ये हो गया. Next, which soil component plays the most significant role in cation exchange capacity? ये भी easy है. Which soil component plays the most important role in cation exchange capacity? जिनके पास नेगेटिव साइड्स होते हैं, कोलॉइडल कॉम्प्लेक्सेस, राइट. किसमें है इन सब में? सैंड में तो नहीं है. नो. क्ले में, ग्रेवल में भी नहीं है, वाटर तो है ही नहीं कंपोनेंट. ओके. What happens to the cation exchange capacity of a soil when pH increases from 4 to 8? ये हमने देखा था. Cation exchange capacity, what will happen to it as the pH increases? We have seen different factors. pH increase होगा तो क्या होगा, organic matter increase होगा तो क्या होगा, clay increase होगा तो क्या होगा, right? Yes, what will happen to the cation exchange capacity of a soil when the pH increases from 4 to 8? What happened to others? Why are you not answering? Here, it doubles. It nearly doubles. Cation exchange capacity will double based on the pH increase. Yes, which soil type has the least capacity to retain and exchange cations, and how can its cation exchange capacity be improved? In the following options given, which soil type has the least capacity to retain and exchange cations, and how can its cation exchange capacity be improved? Yes, it is sandy soils which has the least capacity, and in order to increase, we have to incorporate organic matter. Okay. Yes, a horticulturist is trying to improve the soil structure of a greenhouse to ensure optimal root and water retention. The soil currently has low macro porosity leading to one second. Yeah, question kya hai? Poor drainage and aeration. Now, which of the following approaches would be the most effective in increasing macropores and enhancing the plant growth? Yes. Yes, here in this case, it is encouraging the earthworm activity. Thereby the porosity increases. Porosity increase हो गया मतलब drainage सही से हो जाएगा, and aeration also will improve. Microbial decomposition also will enhance the soil aggregation, and thereby जो porosity है that will be improved. So here is the correct answer. Now, which of the following statements is correct regarding pore space in different soil types? You have to find the correct statements based on the pore space. Yes.
करेक्ट स्टेटमेंट आई वांट। कल मैंने एक टेबल भी दिखा के कई बार आपको समझाया है कि क्ले सॉइल्स में माइक्रोपोर्स होंगे, लेकिन द नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स वुड बी हायर, बिकॉज ऑफ विच उसका पोर परसेंटेज पोर स्पेस इज ऑल्सो हायर। जनरली दिमाग में वो रहता है ना, माइक्रोपोर्स ज्यादा है तो पोर स्पेस ज्यादा होगा। नो, इट इज अ क्ले सॉइल दैट हैज हायर नंबर ऑफ पोर्स कंपेयर टू सैंडी सॉइल्स, एंड ऑल्सो it has the percentage pore space is higher for clay soils, remember, because of which the water holding capacity is very good for clay soils. Okay, so here B is the correct answer. Now, what is the temperature at which a moist soil sample is dried in the oven using the gravimetric method? हमने देखा था ना soil moisture, how to measure soil moisture. उसमें कई सारे methods से one of that method is a gravimetric method. ओके तो उसमें सॉइल मॉइस्ट सैंपल को हम बताया था ना कि इट हैज़ टू बी ड्राइड इन ओवन बिफोर आफ्टर वाला वे, ये सब लेके दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें कितना मॉइस्चर है। एंड यस, इसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना पड़ेगा। Okay, moving on to our next question, again applied based. A farmer wants to monitor soil moisture in a drought prone area to optimize irrigation scheduling. He decides to use a tensiometer. Which of the following factors should be considered when interpreting the tensiometer readings for effective water management? Yes, टेंशियोमीटर को किस तरह से वो यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द सॉइल मॉइस्चर? यस, टेंशियोमीटर में डायरेक्टली हमें रीडिंग्स नहीं मिलते हैं। इट ओनली प्राइमरली मेजर्स द एनर्जी स्टेटस ऑफ सॉइल वाटर विच इज देन कोरिलेटेड विद द मॉइस्चर कंटेंट। ओके, उसका मेट्रिक पोटेंशियल, वाटर एनर्जी स्टेटस जो भी मेट्रिक पोटेंशियल है उसको देखते हैं, बेस्ड ऑन दैट उसको कोरिलेट करते हैं कहाँ पे सॉइल वाटर कितना है। ओके, a researcher is using the electric resistance block method to monitor soil moisture in an agriculture field. After a period of irrigation, the resistance readings from the blocks installed at different depths show a significant decrease. What can be inferred from the observation? Yes. ये हमने देखा ना डिफरेंट डेप्थ्स में किस तरह से। ओके, एनीवन एल्स? So here the increased soil moisture has led to higher conductivity and lower resistance. जब moisture रहेगा तो obviously conductivity increase होगा, and resistance, वो conductivity नहीं करने वाला जो resistance है ना वो decrease हो जाएगा block में। Okay, a soil scientist is using the neutron scattering method to determine soil moisture levels in different parts of a field. After taking measurements, one particular area shows significantly higher counts of slowed down neutrons compared to another area. Now, what does this indicate about the soil moisture content in that area? उस area में? Yes, ये कल हमने देखा था। क्यों स्लो डाउन होता है, क्यों नहीं होता है? What is the result if the
slowed down after bombarding and all that. Yes, anyone else? और किसी को आंसर करना है? यस, इट इज हाई सॉइल मॉइस्चर। जब बोmbard होता है उसकी वजह से द स्पीड विल कम डाउन। सो जितना ज्यादा स्पीड कम हुए न्यूट्रॉन्स मिलेंगे उसका मतलब है उतना ज्यादा मॉइस्चर है। सिंपल। ओके। A farmer wants to optimize irrigation for crops by ensuring the soil moisture remains within the available soil moisture range between the field capacity और permanent wilting के बीच में होता है ना available soil moisture, and that we can understand with the help of soil moisture tension or uska potential, what is it called, metric potential. So based on soil moisture tension, what is a critical range the farmer should maintain to avoid plant stress? ये हमने कल मैंने इतना डिटेलली डिस्कस नहीं किया था, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस क्वेश्चन जो हमने एक जगह पे कंटेंट दिया था। यस, एनीवन कैन आंसर दिस और ट्राई। वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर रेंज। सो हमें फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक हमें देखना है। सो फील्ड कैपेसिटी पे यस नो डाउट 0.33 बार से, बट परमानेंट विल्टिंग इस पे 15 बार से, मतलब इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी ओके टू ग्रास्प टू एक्सट्रैक्ट दैट वाटर, इसलिए ज्यादा टेंशन है यहाँ पे कम है। ओके। सो सिंपल मैंने कंटेंट भी दे रखा है यहाँ पे। सी अगेन, सी soil moisture tension is nothing but it is this term is used, 1 second, कभी कभी ये तंग करता है। ओके हाँ आ गया। Soil moisture tension, this term is often used interchangeably with metric potential, metric potential भी बोलते हैं इसको, and describes the tenacity with which water is held in the soil, requiring a force to extract it. As the soil dries, the metric potential increases, meaning the water is held more tightly, and ये measure होता है bars में और pascals में। तो bars में it is at field capacity it would be in the range of 0.1 to 0.33 bars, and at the permanent wilting point it is 15 bars. So here we are talking about available soil moisture range, so it would be between these two. Okay. Yes. Now, why is the oxygen diffusion rate considered the most reliable measurement of soil aeration capacity? Yes. 3 factors हमने देखा है उसमें soil air में, to improve the air, aeration का हमें understand करना, if you want to understand aeration, उसमें हमने देखा था। Yes. Hope you are maintaining your records. कितने marks मिले किसको last में पूछूंगी। ट्राई कर रहा है कोई? Here, oxygen diffusion rate is nothing but the rate of oxygen replenishment in soil air. Okay, that is oxygen diffusion rate, and that will help us understanding the soil aeration, right? Now, moving on to our last question. Why is soil pH considered a critical factor in plant growth and soil health? Why is soil pH considered a critical factor?
in plant growth and soil health? सी ऑप्शंस देखेंगे तो सभी हमें सेम ही, आई मीन करेक्ट ही लगेंगे, बट फ्रॉम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द विच इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ. बिकॉज बाकी सब में इट एक्ट्स इनडायरेक्टली, but here when it comes to nutrient availability, it directly affects that. Nutrient availability determines the soil's ability to retain moisture. Sorry, ये होगा, but indirectly it influences microbial activity and organic matter decomposition, again indirectly. Okay, and also ये इतना critical नहीं है जितना कि ये है and moisture का है, but here it is indirectly. It controls the soil oxygen diffusion rate, definitely, but again indirectly. It prevents soil compaction and improves aeration. ये गलत है. So here this is the correct answer. So जहां पे भी इस तरह से questions आते हैं, rule out, okay, and then you'll arrive at the correct answer. So this is all from my end today. Yes, now the forum is open for your queries, questions, comments on today's session, and if you have any suggestions, that also very most welcome. Yes, I'm stopping the sharing. Yes, किसको कितने marks मिले? If you want to share. क्या हो गया, स्टूडेंट्स कम है? सॉइल प्रोफाइल हमने किया था ना? यस, ओके, आस्क मी. ओके, यू वांट डिफरेंट होराइजन्स डेप्थ. सो ये थोड़ा मुझे चेक करके बताना पड़ेगा. मैं आपको कल इसके डिटेल्स दे देती हूँ. हु आस्क्ड दिस? नाई. ओके, यस, मैं डेप्थ मेजरमेंट्स आपको दे देती हूँ कल. इवन नाउ मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है कितना डेप्थ है, आई मीन मेजरमेंट के हिसाब से. आई विल गिव यू टुमारो. यस, एनी अदर? नो? सो हाउ वाज टुडे सेशन? गुड. तो हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताना भूल गई. सी व्हाट आई वाज थिंकिंग कि डेली हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में, इन सब में ना हड़बड़ी हो रही है. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज डेली हम लोगों का क्लास होगा 7 to 8:30. यस, 7, सॉरी, 6 to 7:30. 6 o'clock स्टार्ट होता है तो 7:30 तक आई वाइंड अप. ओके, एंड एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब आज अगर पूरा हमने कंटेंट कर दिया है तो कल तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा कंटेंट करके एंड विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इज दैट ओके? वरना एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ेगा एंड आई डोंट नो हाउ feasible इट इज. सो आर यू ओके विथ 1.5 hour क्लास? ओके, नो प्रॉब्लम ना किसी को. मैं सौरभ सर से बात करती हूँ. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. नहीं तो दो इसमें करेंगे. 1 hour का एक क्लास करेंगे, उसके बाद फिर 1 hour का ब्रेक ऐसे देके 1 to 2 hours का, फिर हाफ एन आवर का ऐसे क्लास करेंगे. बट रादर देन दैट एक ही क्लास में करेंगे तो अच्छा, ये मेरा मानना है. अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. नेक्स्ट मंडे से मैं प्लान कर रही हूँ उस तरह से. ठीक है, क्योंकि एक ही इसमें वाइंड अप कर देते हैं एंड विल हैव गुड टाइम फॉर क्वेश्चंस. एंड अभी कंटेंट भी बहुत ज्यादा है तो 1.5 hour क्लास तो हमें लगेगा ही. नहीं, मैं सारे ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आई विल बी टेकिंग फॉर एडीओ. एचडीओ में कुछ ही टॉपिक्स हैं.
ठीक है, एडीओ में तो मैं सारे टॉपिक्स ले लूंगी। उसमें ऑलरेडी उसी में करती आई हूँ तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि कहीं पे कुछ कमी होगी। डोंट वरी। ओके। यस। एंड कहीं पे भी आपके कुछ सजेशंस है, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर देम विद मी, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग ही है, वी हैव 2-3 months मोर टू गो। तो अगर वो जो भी आपका सजेशन है वो फीजिबल है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे से हम इसमें इनकॉर्पोरेट करके विल ट्राई टू एलिवेट दिस एक्सपीरियंस। मोस्टली कल वाइंड अप हो जाएगा निन्ना, कल आई ट्राई टू वाइंड अप टुमारो। ओके। सो थोड़े से लेंदी क्लासेस होंगे हमारे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मुझे मोर देन 100 क्लासेस चाहिए आपके। एंड हमारे पास टाइम, आई मीन हमने टारगेट रखा है कि बाय June 15th वी शुड बी एबल टू वाइंड दिस अप, सो दैट आगे हम लोग खूब रिवीजन करेंगे। लेकिन वो करना है तो अच्छा, मंडे से HDO के भी है क्लासेस। ओके। देखते हैं, मैं एक बार सौरभ सर से पंकज सर से बात करके देखती हूँ व्हाट दे हैव टू से। ओके, टाइम वो सब, अदरवाइज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम्म, हाँ सर, मैं समझ गई व्हाट यू हैव टू से। मैं एक बार आपसे फोन पे बात करती हूँ, देन विल सी किस तरह के टाइमिंग सेट होंगे आपके जो HDO के क्लासेस के टाइमिंग्स के हिसाब से। ओके, विल टॉक ऑन फोन। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन ग्रेट ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट। अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। ओके, गुड नाइट।